Yeah, hello everyone. Should I start? Yeah, I'll just play a quick video, Akshay. Just a second. Sure, sure. Hi guys, good afternoon. Just start by watching a quick video. Just give me 1 minute. हे दोस्तों, वेलकम टू अपना कम्युनिटी। ये वो जगह है जहां आप अपने असली पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखो, सबके पास स्किल्स होते हैं, पर क्या आपके अंदर वो स्पार्क है जो आपको कामयाबी की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है? अगर आप सोच रहे हैं जॉब चेंज करने के लिए लेकिन रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो रहा, या फिर इंग्लिश में इंटरव्यू देना थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है, तो फिक्र मत कीजिए। यहां हम हैं आपके साथ, आपको सपोर्ट करने के लिए। अपना कम्युनिटी में आपको मिलेगी बेहतरीन कम्युनिटीज जहां आप अपने प्रोफेशनल स्किल्स को सुधार सकते हैं। चाहे आप एक्सेल, टैली, जीएसटी में माहिर बनना चाहें, या फिर आप खुद एक ब्यूटिशियन या डिजाइनर हैं, तो यहां आप अपने काम को शोकेस करके दूसरों को टिप्स एंड ट्रिक्स देते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अपना कम्युनिटी में आपको मिलेगा मेंटर्स का एक खजाना और बड़े इन्फ्लुएंसर्स का साथ, जो आपको हर कदम पर 1-to-1 गाइड करेंगे। यहां आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने फील्ड या इंडस्ट्री स्पेसिफिक ग्रुप्स, जहां आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जिनसे सीख के आप वो गलती ना करें जो वो कर चुके हैं। ऐसे लोगों की जिन्होंने स्टार्ट किया था एज एग्जीक्यूटिव्स एंड आर नाउ सक्सेसफुल मैनेजर्स इन देयर डोमेन्स, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। यहां आपको मिलेगा वो सही डायरेक्शन जो आपकी करियर को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। तो लेट्स अनलॉक योर पोटेंशियल टुगेदर। अपना कम्युनिटी में ज्वाइन करें और अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचने का सफर शुरू करें। Hey guys, good afternoon. Thank you so much for joining on a weekend in the afternoon. So we have an exciting session ahead. So we'll just start today's session now. If you're participating for the first time, I'd like to start with a quick introduction. As part of Apna Community Exclusives, a webinar series that we have been hosting for the past couple of months. So we host regular sessions from 7 p.m. on weekdays, that is Monday to Friday, it's at 7 p.m. And between 3 to 5 p.m. on weekends, Saturday and Sunday, it's between 3 to 5 p.m. like today. So we have covered so far a variety of subjects like product management, Gen AI, interview prep, resume creation, technical skills, etc. The main objective of these events is to help you grow professionally, help in the advancement of your career, and also get you better jobs. So today's session is about the future of renewable energy. So for this session, we have Akshansh with us. He's an R&D engineer at IdeaForge. A bit about him is that he's a research scholar in the field of aerodynamics and flight mechanics, and currently he's working as a flight performance engineer in an aerospace company. He has a few years of experience as a mentor as well, and we're glad to have him with us today. Thank you so much, Akshansh, for joining us. Before I hand it over to him, guys, if you have any questions at any point, please feel free to use the chat box. We'll also allow you to unmute yourselves and ask questions in between. आपको कभी भी किसी वक्त पे कोई भी सवाल हो, आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको समय समय पे अनम्यूट करने का भी मौका दिया जाएगा। अगर आप अपने फोन से लॉग इन कर रहे हैं तो आपको वो 3 डॉट वाले ऑप्शन पे जाके इन कॉल मैसेजेस पे जाना पड़ेगा, वहां पे आपको पूरा चैट दिखाई देगा। If you're logging in from your phone, just go to the options menu with the 3 dots, and in that you'll see the in call messages option. You can tap on that to see the chat box. Great. Without any further ado, Akshansh, I hand it over to you. So yeah, thank you so much for this humble introduction. Uh, I welcome everyone here. And yes, so the introduction about myself has been already given. I would like to straight away deep dive deep into the topic of the renewable energy. So before that, I would like to just explain why renewable energy as a topic. So renewable energy is so by this I would like to understand like do anybody know anything about renewable energy and something like that? Can you please tell anybody anything about the renewable energy?
Okay. So basically, there are two types of energies: the renewable and the non-renewable. So the renewable energies are those forms of energies that can be just regenerated at a short period of time. The non-renewable energies also would be regenerated, but it will take a lot of time to just renew that energy, like coal, like but the biogas plant also would be a mediocre level renewable energy because it also takes roughly 30 40 days to just compost, and you can use that energy. So on one side it's like uranium, coal, uh, thorium, these kinds of minerals that provides energy. And on the other side, there are components like sun, like wind. They are abundant in nature, like water. So they are abundant in nature. You just have to utilize those things for our personal needs and just reshape it in such a manner so that it could be harnessed in the form of energy. So those are renewable energies. I hope it is clear for you guys. Is it clear? Please say yes or no so that I could just jump into the jump into the next topic. Okay, so I would like to share my screen so that I could just show you the presentations on the renewable energy one by one. So yeah, before just talking anything about the same, um, yeah. So is my screen visible, Siddharth? Yeah, yeah. So yeah, so basically what happens is like there are components of renewable energies like the wind, the solar, the water, anything like whichever I told you guys. So we would straight away not try to jump into the results of each and everything, but would like to share it on a sequential manner so that uh, everything could be explained or elaborated to you guys in a proper sense. So before that, I would also tell you the importance of these renewable energies and how is it reshaping the future of um India or world. So before, we were not able to, on the global scale, I'm saying that beforehand, around 20, 30 years ago or ago, we were not able to just maximize the utilization of the renewable energy at its maximum potential. So at that point in time, we were using coal as a major source of energy. So we were burning coal, and due to the burning of coal, as we all know, there are uh, greenhouse gases that gets released because the carbon is a major component in coal. So when we burn it, there are a lot of unburned carbon particles that pollutes the environment, and as a result of which this creates a lot of pollution. So beforehand, around 20-30 years ago, हम लोग धीरे धीरे करके we were extracting coal, we were generating energy. At that point in time, we were not able to realize the uh, demerits of it. But later on, around 10 years ago, there was a ozone. So there is a ozone layer on the top of our Earth atmosphere that actually protects the entire Earth from the greenhouse gases that are being released from the sun or from the space. So what happened was like जब हम लोग बहुत ज्यादा coal extraction करने लगे, we started to dig more, utilize coal more, produce more energy, and it became a profitable market for the businessmen in the country and even in the globe. So तो उसके चलते क्या हुआ कि that layer started depleting, वो धीरे धीरे पतली होने लगी, and due to which there happened to be couple of holes in ozone
दैट हैपेंड टू बी इन ऑस्ट्रेलिया. सो ऑस्ट्रेलिया में फिर क्या हुआ कि जब वो ओजोन होल्स हो गए, तो विदाउट एनी फिल्टरेशन वो स्ट्रेट अवे रेज जो थी ओजोन की, दैट स्टार्टेड हार्मिंग द ह्यूमन बींग्स और द एनिमल्स. तो we started getting a lot of cases of skin infection. We started getting a lot of diseases that are prone to radiation, and lot of cell divisions and everything started happening. And as a result of which, the intensity of people getting harmed by the radiations started becoming more. और उसके चलते फिर लोगों ने फिर ये सोचा, मतलब देयर हैपेंड टू बी अ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट. हैव यू गाइस हर्ड अबाउट इट? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट. बार बार प्राइम मिनिस्टर इंडिया के भी जाते हैं, वहां पास कुछ चीजें कहते हैं, सारी कंट्रीज कुछ ना कुछ चीजें कहती हैं, एंड पीपल यूज्ड टू अग्री ऑन सर्टेन टर्म्स नॉट टू पोल्यूट द एनवायरनमेंट एनीमोर एंड स्विच फ्रॉम द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज टू द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, बिकॉज I won't say they are not polluting, but they are comparatively very less polluting when it is compared with the coal and uranium, because they are straight away impacting us in a very shorter time. नॉन रिन्यूएबल में भी ऐसा है कि मतलब अगर आप सोलर को आप देखते हो, तो सोलर में भी आपको लिथियम एंड बैटरीज, या फिर लिथियम पॉलीमर बैटरीज, या फिर गैमेट सेल्स, आपको कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा. तो उसके चलते क्या होगा कि वो सेल का डिस्पोजर अगर सही से नहीं हुआ, then that also will create a pollution in the environment. But उसका स्केल कम रहेगा, और अगर उस चीज को रोका जा सकता है if we try to take care of certain norms before just disposing those batteries which are not used, lipo cells batteries and all those things. So अब क्या हुआ कि after, so I'm telling you like a story, so what happened earlier and how people started getting more inclined towards the renewable sources of energy. So that would uh, that would be more impactful. So उसके बाद क्या हुआ कि people started all the world leaders everywhere started gathering at a place which is Paris in the west, in France, and उसके बाद they started discussing on certain environmental issues, जिसमें they put forward a certain inclination towards preserving the environment. So preserve कैसे करेंगे environment को? Environment को preserve करने के लिए we have to take care of certain norms and certain regulations that needs to be followed. तो regulations बनाए गए, मतलब बहुत सारे people started creating regulations and norms, जिसमें every country सिग्नेचर्ड, मतलब सारी कंट्रीज जो भी उसकी मेंबर हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की, सारी बड़ी कंट्रीज जो भी जिनकी भी कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा है, जैसे यूएस हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, सारी कंट्रीज हैं मतलब. अब उसके बाद क्या हुआ कि पीपल साइंड टू सर्टेन रेगुलेशंस एंड दे स्टार्टेड coming to an agreement where they will not completely ditch the non-renewable sources of energy like coal, but they will also include renewable sources of energy as a supplement that could potentially reduce the burden on the non-renewable sources of energy. So उससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका renewable sources of energy का component बढ़ता जाएगा और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का कंपोनेंट कम होता जाएगा. एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पास आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का कंपोनेंट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि एट दैट पॉइंट इन टाइम आप रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से इंडिपेंडेंट काम कर सकते हो. आपके पास सारा कंट्री जो है दैट इज सेल्फ सस्टेन्ड ऑन द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो दिस वाज basically a short concise form of what happened in the Paris Agreement, and it was actually very alarming for each and every country, because क्या था कि all the countries that were there, actually every single country was facing this kind of issue on a very alarming scale. तो हर कंट्री का एक कॉमन एस्पेक्ट है कि उनका कंट्री कम से कम सेफ रहे, बाकी उनको दूसरे कंट्री में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, बट एटलीस्ट दे वांट अ पीसफुल एनवायरनमेंट फॉर द सिटीजन्स लिविंग इन दैट कंट्री एंड एटलीस्ट फॉर देम एक्चुअली. सो इन्वायरमेंट क्या है कि इन्वायरमेंट अगर खराब होगा तो अमीर आदमी के लिए भी खराब होगा, गरीब आदमी के लिए भी खराब होगा, नेता के लिए भी खराब होगा, नॉर्मल आदमी के लिए भी खराब होगा. तो इट इज अ वेरी कॉमन इशू दैट नीडेड टू बी एड्रेस्ड. तो उसके लिए हम लोग सारे वर्ल्ड लीडर्स
एक ही मतलब ये बहुत कम होता है कि मतलब सारे वर्ल्ड लीडर्स एक कॉमन इश्यू पे एकदम कलेक्टिवली गैदर करके सिंगल वोट देते हैं, मतलब एक ही साइड में वोट देते हैं। तो ईच एंड एवरी कंट्री दे वर हैविंग सर्टेन नेगोशिएटिंग पॉइंट्स, बिकॉज उनकी कंट्री का इकोनॉमी जो है वो वाज रनिंग फ्रॉम द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उनको एकदम से इंडिपेंडेंट कर देना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। बट even apart even that was not happening. They were agreeing partially to certain components of discussion, and they were agreeing completely to certain components of discussion, but it was not happening कि they were not agreeing completely, they were agreeing to things। और ऐसे करके मतलब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट एक फॉर्म हुआ, जिसमें मतलब the emphasis towards this renewable source of energy started becoming more। अब इससे क्या हुआ, इससे हर कंट्री के जो वर्ल्ड लीडर्स थे वो वापस अपनी कंट्री में आए, एंड दे स्टार्टेड pushing, or they started pumping money into the renewable source of energy, and they started, जैसे इंडिया में भी जो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे स्कीम्स चलाए हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोर्सेस का जो मिनिस्ट्री है उसने काफी सारे फंड्स दिए हैं न्यू स्टार्टअप्स को, जिसमें वो एक्चुअली रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं। और जो भी कंपनीज या जो भी आइडियाज रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारी आइडियाज और सारे पॉइंट्स को मतलब ये बताया जा रहा है कि आप लोग ये चीज पे काम करो, एंड वी वुड बी एक्चुअली पुटिंग फॉरवर्ड द दिस money to it, and will straight away increase the amount of money slowly and steady, and एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि मतलब these companies will flourish, और जैसे जैसे कंपनीज फ्लरिश करेंगी they will actually create that ecosystem of renewable energy that will suffice or that will complement the energy demands of the country। और ऐसे बहुत सारे जगह है, जैसे मध्य प्रदेश में प्लेसेस हैं बहुत सारे, जैसे रीवा करके एक जगह है, फिर आपका राजस्थान में बहुत सारे जगहें हैं, बीकानेर है, जहाँ पर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनको बहुत अच्छे से प्रमोट किया जा रहा है। एंड पीपल आर एक्चुअली they are actually like promoting this in a very very complimenting manner। तो अब हम लोग तो इससे क्या होगा कि इससे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मनी आया, तो मनी आने के चलते में क्या होगा कि अब पैसे भी बढ़ेंगे, पैसे बढ़ेंगे तो लोग काम करने को ज्यादा जाएंगे, people started working more, they will start to earn more, and this will actually increase the country's economy, the per person capita, GDP, everything will be increasing in that sense। तो अब क्या है, हमारे को कुछ कोलैबोरेटिंग इवेंट्स भी हुए जिसमें यूएस इंडिया का कोलैबोरेशन हुआ, एंड दे स्टार्टेड साइनिंग सर्टेन पैक्ट्स ऑन एनर्जी स्ट्रेंथनिंग। तो अब ऐसे एक कंट्री सिंगल हैंडेडली सारा कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसको एक्चुअली बहुत सारी डेवलप्ड इकोनॉमीज, या जैसे अभी क्या है कि ये पेरिस एग्रीमेंट होने से पहले भी रिन्यूएबल एनर्जी पे काम होता था, but it sorry but it wasn't happening in all the countries, it was happening in uh, certain developed countries, I would say certain small countries जिनकी energy requirement कम है, for example Sweden, for example Norway, for example Netherlands, for example Scotland, फॉर एग्जाम्पल डेनमार्क, ऐसी कंट्रीज जिनमें विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी पे पहले से काम हो रहा था, एंड दे बिकेम द टॉर्च बियरर्स फॉर प्रमोटिंग दिस रिन्यूएबल एनर्जी। तो अब क्या है कि देर आर सर्टेन एग्रीमेंट दैट वर मेड विद स्वीडन, विद यूएस, जिसमें हम टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर रहे हैं, and also we are promoting certain companies, we are inviting certain companies into India, and that will result into more jobs, more employment, and these kinds of stuffs। तो इससे क्या होगा कि there is a strengthening of the ecosystem of the renewable energy deployment and cross cutting the efforts of non renewable sources of energy। मतलब
जो हम मेहनत डाल रहे हैं टू प्रमोट एनर्जी डिमांड ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, सॉरी, उसको हम लोग कैपेबिलिटी फॉर्मेट में पूरी कैपेबिलिटी के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि वी कैन suffice that energy demand by the renewable source of energy. So there are various policies, as I said, the various utility supports or assistance that the PSUs and the government is providing, like PSUs like ONGC, Coalfield India Limited. These are actually companies that were generating non-renewable sources of energy or supporting non-renewable sources of energy. But as these are very popular companies, they're having big pockets, deep pockets. Government started straight away. Government started promoting these companies, and in their this thing, what to say, in their social welfare fund. They also added this renewable energy fund as well. जो वो छोटी छोटी कंपनीज को they started giving, and they started supporting छोटी छोटी कंपनीज to grow and nurture. अब उसके बाद क्या हुआ कि ह्यूमन डेवलपमेंट सपोर्ट, जैसे जॉब ज्यादा आएंगी, फाइनेंसिंग ज्यादा होगी, तो ये सारी चीजें इकोसिस्टम में वो बिल्ड करेगी. अभी प्रोग्राम एजेंसी जैसे हम आपको बताए हैं, IOCL है, इंडियन रेलवेज है, JVNL है, टाटा क्लीन टेक कैपिटल है, बहुत सारी प्राइवेट जैसे प्रोग्राम, मतलब जो सारी कंपनीज आई इस पूरे इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए. तो उसमें बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज तो आई ही, पर उनके साथ साथ में बहुत सारी प्राइवेट डेवलप्ड कंपनीज जो इस इकोसिस्टम में पहले से थी, जैसे टाटा पावर पहले से है, बट दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इनटू द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर. अब जैसे सुजलॉन है, सुजलॉन भी आई. सोलर है, सोलर एक कंपनी है नागपुर की, दैट आल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस. तो सपोर्ट टू यूटिलिटीज इन राजस्थान एंड कर्नाटका. तो यहाँ पास क्या किए कि बिल्ड बेसिक अंडरस्टैंडिंग अमंग यूटिलिटी ऑन सोलर PV रूफटॉप, मतलब वर्कशॉप्स बनाई गई जो पॉलिसी मेकिंग और मतलब यूटिलिटी मैनेजमेंट पे प्रमोट करेगी कि कैसे सोलर मैनेजमेंट को हम लोग एक एनर्जी ड्रिवन इकोनॉमी बना सकते हैं. फिर establish technical requirements and processes. So to establish processes and technical committees, engage other departments, finalize decision making and flow and technical requirements, application requirements. तो मतलब इस सारी चीजों को एक इकोसिस्टम बिल्ड करने का ट्राई किया गया उन स्टेट्स में पहले. जैसे टारगेट बनाए गए अलग अलग, जैसे सोलर के लिए कौन कौन से स्टेट्स है इंडिया में जहाँ बहुत सनलाइट होती है, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया. ये सारे एरियाज में गर्मी बहुत होती है, तो गर्मी को कैसे यूटिलाइज करें. सो सोलर एनर्जी से हम हार्नेस कर सकते हैं, वी कैन यूटिलाइज दैट. अभी जैसे पौंडीचेरी हो गया, तमिलनाडु हो गया, फिर आपका महाराष्ट्र हो गया, लेह लद्दाख हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, ये सारे जगहों पे एक्चुअली में आपके विंड एनर्जी को प्रमोट किया जाता है, बिकॉज वहां पास आपका इकोसिस्टम विंड एनर्जी के आइडियल है. तो इस तरीके से धीरे धीरे करके there are various public communication and awareness programs that were also guided for regulating and monitoring the improvement into this standardized procedure for creating a study based approach जिसमें हमको बेनिफिट मिलना पक्का हो. फिर उसके बाद PSU के लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम्स बनाए गए जो हमको बताया कि टू सपोर्ट डिफरेंट स्कीम्स लाइक रैशनल, लाइक आपके इंडियन ऑयल में आपका क्या किया गया कि सोलर रूफटॉप प्रोग्राम फॉर 3 रिफाइनरीज विच वाज काउंटिंग टू 6.5 मेगावाट ऑफ एनर्जी. फिर कंपनी लेवल पॉलिसी एंड सोलर PV रूफटॉप डिप्लॉयमेंट इन ऑल IOCL बिल्डिंग्स, मतलब सारी IOCL बिल्डिंग्स को ऐसे आप देख सकते हो कि यहाँ सोलर रूफटॉप को प्रमोट किया गया. फिर आपका 1 गीगावाट ऑफ सोलर पार्क इन्वेस्टेड बाय इंडियन ऑयल एंड ऑयल इंडिया, ये आपका असम में हुआ. फिर आपका इंडियन रेलवेज क्या किया कि इंडियन रेलवेज ऑल्सो 50 मेगावाट ऑफ सोलर रूफटॉप प्रोग्राम ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म्स. सो रेलवे प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उनमें हमारा 50 मेगावाट. तो एक बार में आप
तो अगर सोचोगे कि एक बार में एनर्जी डिमांड को पूरी तरीके से रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट कर दे, तो दैट वोंट हैपन, दैट कैन नॉट हैपन एक्चुअली, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन किसी वेस्टर्न छोटी सी कंट्री, नॉर्डिक कंट्रीज की पॉपुलेशन के बराबर नहीं है। वहां पास अभी न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन अगर आप देख लो, नॉर्वे का पॉपुलेशन देख लो, हार्डली 50 लाख लोग रहते हैं। तो वहां आपका पॉलिसी मेकिंग बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज द burden of population that the country is facing is very less there. तो आपको कोई भी पॉलिसी को चेंज करना है कुछ भी, और देखो आप जितने भी लोग रहेंगे उतनी तरीके की आइडियोलॉजीज रहेंगी, उतने तरीके की मार्केट प्लान्स रहेंगे। अभी बहुत सारे लोगों का सस्टेनेबल बिजनेसेस रन कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे, जिसमें कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें डिगिंग इक्विपमेंट्स हैं। तो वो लोग क्यों चाहेंगे कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस बंद हो जाएं और रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस चालू हो जाए? उनको तो पूरी तरीके से बिजनेस को शट डाउन करके नया बिजनेस खोलना पड़ेगा, राइट? तो इसमें गवर्नमेंट, पॉपुलेशन, अंडरस्टैंडिंग सब कुछ बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं टू फंक्शनली एक्चुअली बेनिफिट द कंप्लीट सिनेरियो। मतलब उसमें क्या है कि आपका एक चीज से कभी भी ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्टिंग फैक्ट्स हैं जिनको आपको एड्रेस करना पड़ेगा इसके लिए। फिर आपके बहुत सारे प्रोग्राम सपोर्ट्स आए, जिसमें रैशनल सोलर पीवी डेवलपमेंट आया, साइट सर्वेज आया, एनालिसिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स आया, एड्रेसिंग टेक्निकल कंसिडरेशंस आया, डिजाइनिंग ऑफ आरएफक्यूज, आरएफपीज एंड पीपीएज आया, कैपेबिलिटी बिल्डिंग और जोनल रीजनल ऑफिसेस है। फिर आपका सोलर एनर्जी में उसका ट्रेनिंग नेटवर्क एक बनाया गया, जिसमें वर्कफोर्स नीड्स, द फ्रेमवर्क, लर्निंग प्रोडक्ट्स एंड हाउ द सन इज एक्चुअली बेनिफिटिंग, वो चीज का पढ़ाई भी चालू हुआ। There are different schemes from the government. आपका बेस्ट प्रैक्टिसेस तो सोलर के लिए वी कैन सी दिस ओनली, कि मतलब आपका इतने सारी कंपनीज जो हैं आपकी और इतने सारी जगहों पे आपका इतने इतने मेगावाट के प्लांट्स आपके लगाए हैं। आपका सोलर डिमांड जो है, रूफटॉप सोलर इन द यूएस, तो आपका यूएस मार्केट से कंपेयर करना है अगर आपको, तो यूएस में देखो आप ग्रीन एनर्जी सोर्सेस कितने ज्यादा बढ़े हैं आपके एक्चुअली में, कितने ज्यादा बढ़े हैं। मतलब 2016 ऑनवर्ड्स आप एक जंप दिखा है आपको। तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बाद दे स्टार्ट टेकिंग थिंग्स सीरियसली, बिकॉज कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी हेल्थ खराब हो जस्ट बिकॉज दे आर एक्चुअली getting hampered by taking or breathing wrong air or something like that, or having ozone holes in their country. So these things are like really alarming. Now the observed pathways. So देखिए अब आपका यूएस में कैसा हुआ कि यूएस में आपके डिफरेंट स्टेट्स हैं, जैसे कैलिफोर्निया हो गया, मिनिसोटा हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, हवाई आइलैंड हो गया, मेक्सिको हो गया, फिर अमेरिका का है, और फिर नेवाडा हो गया, एरिजोना हो गया। ये सारे स्टेट्स में एक्चुअली द कस्टमर मार्केट भी बनाया गया, गवर्नमेंट के थ्रू फंड्स लाए गए। तो फिर प्रॉपर एक एग्जीक्यूशन प्लान बनाया गया जिसके थ्रू एनर्जी को हार्वेस्ट करने का प्रॉपर नेटवर्क। तो ऐसे ही नेटवर्क हमको इंडिया में बिल्ड करना, और बिल्ड हो रहा है एक्चुअली में, बिल्ड हो रहा है, धीरे धीरे होगा। कंपनीज आर स्टार्टेड टू कम, देयर आर डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट मार्केट्स, different policies, different associations, different economy plans, so different jobs as well. हाँ, तो ये था पहला स्लाइड आपका एक्चुअली में। नाउ अब आपका विंड एनर्जी आता है, राइट? तो विंड एनर्जी में विल बी टेकिंग दिस इनटू कंसिडरेशन एज वेल, कि अब हमारे सोलर एनर्जी को तो हम लोग अच्छे से एड्रेस किए हैं कि मतलब सोलर एनर्जी कैसे क्या है। हाँ, वैसे ही एक और टैप्ड चीज है जो इंडिया में बहुत ही अबंडेंट में है, जैसे विंड। विंड एक्चुअली में इंडिया में कहीं भी विंड की कमी नहीं है एक्चुअली में। मतलब सब ट्रॉपिकल एरिया है, तो पेनिनसुला है एक, तो हवा हमेशा ही मतलब फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द नदर्न प्लेन्स हमेशा ही रश करते हैं। तो और हमारे पास हिमालयाज है, हिमालयाज एक बैरियर की तरह काम करता है जो हमारे फ्लो को रेगुलेट होने देता है, हमारा एक आइडियल टेम्परेचर बनाता है कंट्री का। तो अब एनर्जी सिनेरियोज इन इंडिया हम समझते हैं। तो
अभी के पॉइंट ऑफ व्यू पे 2016 के हिसाब से, दिस वाज एक्चुअली इन 2016, कि जब थर्मल का मार्केट देखिए आपका 61% है, मतलब देख लीजिए आपकी होल इंडिया का कितना बड़ा वो है। हाइड्रो का 14% मार्केट है, रिन्यूएबल एनर्जी का 15% है, गैस का 8% है, न्यूक्लियर का 2% है। अभी का 2024 का मार्केट में रिन्यूएबल एनर्जी का मार्केट 24% हो गया है, और थर्मल का मार्केट आपका 55% हो गया है। तो हाइड सॉरी 45% हो गया है, हाइड्रो का मार्केट आपका 20% हो गया है। तो दिस शोज अ क्लियर कट पुश जो हमारा गवर्नमेंट के थ्रू पॉलिसी से मिल रहा है, जो प्रॉपरली एग्जीक्यूशन और प्रॉपर प्लान्स के थ्रू हमको दिख भी रहा है कि मतलब पीपल आर एक्चुअली फंडिंग और पीपल आर एक्चुअली पुटिंग इंटरेस्ट इनटू दिस काइंड्स ऑफ बिजनेसेस। अभी देखिए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में विंड का पोर्शन 61 है, बायोमास का 11 है, एसएचपी का सेल्फ हेल्प ग्रुप हैंडलिंग प्लांट्स का 10% है, सोलर का 18% है। तो विंड का कितना बड़ा मार्केट है, आप खुद ही देखिए। विंड के इतने बड़े मार्केट को कोई टैप ही नहीं करने की कोशिश कर रहा है। तो देर देर आप लोग भी अगर कुछ ऐसा आइडिया सोच रहे हैं, कुछ भी people like you are actually planning to invest into certain businesses, so try learning more onto wind energy and how this wind energy could be harnessed and these kinds of stuffs, because this will be actually playing a clear cut advantage in generating a large form of energy without creating much हैम्पर टू द एनवायरमेंट। बिकॉज आपका एक बार सोलर एनर्जी में भी आपका बैटरीज का यूज होता है, पर विंड में तो कुछ भी नहीं होता है माय फ्रेंड्स। विंड में तो आप पूरी की पूरी तरीके से सस्टेनेबल बना सकते हो पूरे के पूरे बिजनेस को विदाउट क्रिएटिंग इवन अ सिंगल पॉइंट ऑफ कार्बन फुटप्रिंट। हाँ, तो देखिए पीपल आर एक्चुअली पुटिंग इंटरेस्ट इनटू इट। तो धीरे धीरे करके विंड का मार्केट 2002 में कितना छोटा था, स्मॉल हाइड्रो का मार्केट कितना छोटा था, तो ये आपका स्मॉल हाइड्रो था एक्चुअली, सॉरी स्मॉल हाइड्रो था। फिर ये जो 2007 में थोड़ा बढ़ा, 2012 में थोड़ा बढ़ा, 2014 में देखिए अब कितना बढ़ गया, और 2022 में आपका सोलर का मार्केट देखिए, विंड का मार्केट देखिए। So these are clear cut pushes that our government is doing, that our government is doing. So renewable energy resources and potential. So आपका wind हो सकता है, so wind is generating around 302 gigawatt at 100 meter hub height. तो आपका सॉरी आपका दो तरीके का विंड टरबाइन होता है। एक आपका होता है वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन, और एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन। तो जो वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन होता है वो आपका वर्टिकल ओरिएंटेशन में रोटेट करता है। तो आपको मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा देते हैं। तो अगर आप मान लीजिए ये तीन ब्लेड्स हैं, ठीक है, और ये तीनों किस एक्सिस पे रोटेट करता है, आपका ये और ये। तो जब आपका ऐसे रोटेट होगा तो ये वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन होगा, क्योंकि ये वर्टिकल रोटेट कर रहा है। और जब जो आपका विंड मिल होता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रोटेट करता है। तो आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन होगा, एक ऐसे रोटेट करता है, एक ऐसे रोटेट करता है, ठीक है। तो आपका दूसरा हो गया सोलर एनर्जी पावर, जिसमें आपका सोलर पावर 750 गीगावाट ऑफ एनर्जी बनाता है, assuming 3% wasteland is made available 60 to 60 kilometers square kilometers of।
आपका ऐसे बायोमास है, ऐसे स्मॉल हाइड्रो और बायोमास अभी भी डेवलपिंग फील्ड है, बट ठीक है, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब या सो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट। तो आपका जैसे ही उसमें था सोलर एनर्जी में, वैसे आपका रिन्यूएबल एनर्जी में भी आ गया। तो रिन्यूएबल एनर्जी में 1981 में एक कमीशन बिठाई गई। जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Yeah, Tej, do you have a question for Akshay? खाली हुआ है तेरे को जाऊंगा। Guys, if you have any questions, please use the chat box. Shash will be back in a minute. Tej, you had raised your hand. If you have any questions, you can use the chat box or you can unmute yourself as well. ओके सर। वो कोई भी सवाल हो तो आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप जैसे आपने अनम्यूट किया अभी, आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं. Akshay, if you are speaking, you are on mute. Yeah, Aftab, you have a question? Tab, if you have a question, you can unmute yourself or you can even put it in the chat box. Chansh will be back in a minute. Hello. Yeah, Chansh. Yes. Should I start? Actually, I was speaking, but I did not remember that I have Oh, to unmute my mic. So okay. yeah, No if you worries. have any questions, yeah, please ask. Otherwise, we can just restart the thing. Okay, I would prefer starting it again. So I was into this slide. So in 1982, there was a Department of Non-Conventional Energy Sources that was created in the Ministry of Energy. So the policy implementation of the renewable source of energy, but they were initially made with the ideology of energy market, uh, what to say, sustainability, be it renewable, be it non-renewable. Because earlier, as I said, renewable energy market wasn't that strong, but India as a big country had to suffice its energy demand. So non-renewable sources was a very prominent source of energy. But yeah, later on, for example, in 1992, DNES became the Ministry of Non-Conventional Energy Sources. In 2006, MNES was re-designated as Ministry of New and Renewable Energy, MNRE. So the nodal ministry for all the matters relating to renewable and non-renewable sources are wind, solar, small hydropower up to 25 megawatt, bioenergy, new energy sources. So there are different coordinated policies that were made for actually sufficing the energy demands.
greener format. So for that, actually, there were different government bodies as well as there were different non-government institutions. There were different private institutions. There were different NGOs. Those were actually regulated and started to actually uh, help growing the economy. So yes, each and every industry the economy of the renewable market under its umbrella. And as I said, if you want to start something, do something in this regard, opt for some courses, opt for some skill training advancements from the government, start some businesses if you have certain pocket funds. Uh, if you're able to invest into you, but you need to come up with an idea, and that would actually benefit it. So, what is the institutional structure? This is not very Church, your voice is important. breaking. So yeah, you can see the renewable energy regulatory framework, how it grew into the non-renewable market, from the non-renewable market to the renewable markets in the latest. So policy and regulatory framework for renewable energy, the electricity Yeah, of Church, can you hear me? yeah, I can hear you. Can you hear me? Yeah, now I can. Okay. Yeah. So yeah, different policy frameworks. Uh, so one of such policy, are you able to hear now? Yeah, Church, we can hear you. Okay. So the policy in 2006, that was National Tariff Policy (NTP), which was suggesting a minimum percentage procurement should be made from all applicable latest by. So yeah, these were actually the policy regulatory bodies that actually started to emerge and show its inclination towards the green energy by creating a certain specific percentage cut of energy generation from the renewable markets. And then, as I said earlier in the meeting, that initially 100% of the energy was produced from non-renewable markets. Now, 90% of energy is produced from non-energy markets and 10% renewable. Then slowly, 20%, 30%, that will reduce the load on the non-renewable markets. So the change won't happen in a day or overnight. It will have to be done or complemented with a number of good steps, small baby steps that needs to be taken. And slowly and steadily, I hope and I wish the country will move towards a sustainable market. Uh, so yeah, this is basically the so yeah, there is a certificate program that anybody who needs to just go into the renewable energy market uh, for starting their businesses, they have to get a renewable energy certified certificate from the government of India, and then they can start the business. They can approach investors, they can get fundings, and then they can start the market. So yeah, this thing that you see here is a wind energy farm that is in Tamil Nadu, and this actually is a horizontal axis wind turbine, as I suggested.
So the growth of the wind Shash, we are losing you in between. steadily, the progress is being made. And are you able to hear me now? The sound is breaking actually. Hey guys, Shash will be joining in a minute. Meanwhile, please Hello? do fill this Can you feedback. hear me Yeah, now? Shash. Can you Yeah, hear me? yeah. Okay, yeah, perfect. So I would actually give the last 10 minutes for questions because questions haven't been asked for the entire session. So at 3:50, I would stop and then you can ask your questions. Please ask questions, otherwise, it won't make any sense. I would just drop off the call at 3:50. Uh, the third presentation that we will be going through is this is basically not a presentation but a research paper. Uh, Not much needed. Anyways. So yeah, we were here on the growth market of the wind. See, during 2002 and 2003, the electricity produced by the in the 2010, there happened to drop in 2012 and 13, and then slowly we are again back onto the track. We are increasing the wind energy uh, comfortability in generating wind energy from our energy source market and trying to give a budget uh, or a cushion to the non-energy sources so that the fiscal deficit of energy could be maintained by the renewable sources. So actually, even after so much of coal and everything, we are still facing that deficit of energy. So in in this point in time, we are trying to just fulfill that deficit itself with the renewable sources of energy. And once that deficit is filled by the renewable source of energy, then we'll start to complement the non-renewable source of energy in the main energy generation. First, तो जो गैप है उसी को भर लें नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से, और फिर धीरे धीरे जब गैप भर जाए तो फिर धीरे धीरे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो नॉन रिन्यूएबल प्रोड्यूस करता है उसको भी हम कॉम्प्लीमेंट करने लगे. तो हम अभी गैप भर चुके हैं धीरे धीरे. नाउ वी आर ट्राइंग टू कॉम्प्लीमेंट द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. This is what was actually mentioned from this graph. Yeah, this is the increase in the market of the wind. You can see a increase itself. Different states are there. So Tamil Nadu, as I said, experiences the maximum this thing. And yeah, uh, it's at the bay of the state is at the bay of a subcontinent. We are experiencing a wind from the sea, from those sea lying states. Growth of wind, extensive wind resource assessment data needs to be done. Technologically development and a strong domestic manufacturing base has to be provided. Quality assurance should be done so that the energy that is getting produced should be of a quality. Should be also made for the investment policies so that the regulatory bodies and the companies that are coming into this sector should
get the motive to work into the sector more and try to benefit the complete scenario. Wind, onshore wind potential, as I said, you is filled with potential to harness energy, and the air rushes from here to the mainstream land. So anything could be harnessed from here. And here also, the Himalayas are there. Along this complete till Arunachal, from Arunachal till Jammu Kashmir. This potential. So yeah, here you can see the blades that are getting manufactured. देखो कितना बड़ा blade है ये. These are the big blades that are being manufactured that are used for the energy generation in the vertical axis, horizontal axis wind turbine. Yeah, so this was the graph. Quality assurance, policy initiatives. Offshore. Yeah, as I said, this peninsula is completely filled with the potential to generate energy, and this Andaman and Nicobar Islands as well, and the Lakshadweep Island, Karavati Islands, everything. So yeah, this is how you generate wind energy, solar energy, and you can creating a loop that is generating the energy from solar and the wind. Hey, Akshay, can you? Yeah, I can hear. Okay. No, I think we were losing you towards the end as well. Oh, No can you hear worries. me now? So, Can you hear me better, now? better. Okay. Thank you so much, Akshay. Guys, we'll just wait for 1 more minute. If you have any questions, we'll take it up. Or thanks, you can just conclude the session with any ending thoughts or notes or references that you Yeah. can. So just wait for a minute. Okay. Guys, any questions, you can put it in the chat or you can also unmute yourself. Please do utilize this time. Anything about renewable energy, career related, opportunity related, can please feel free to ask. While you're waiting, please do fill this feedback form. I'm just sharing it again for the last time. It will just help us plan or execute the sessions better. It will be a feedback for the mentor speakers as well. Please utilize it. Okay, Akshash, I think there's no questions. So just want to know any give takeaways for the session. Yeah, so I would, as we discussed into this entire session, that the renewable energy market is growing. Uh, please take this thing seriously. Um, the non-renewable sources won't benefit us for a longer period of time. They are just for very short period of time. So if you want to just start new businesses, start new learning programs, you can just help yourself by learning such techniques that could benefit you into the technology enhancement of this field. And the government is providing a lot of initiatives. So if you are able to grab this thing successfully, you will be actually doing well into your career. So yeah,
that is one suggestion from my side, to take this thing very seriously and try shaping your career into this if you haven't started doing it. And take the non-renewable source of energy very cautiously, because they are for very short period of time. Don't litter places. Don't burn charcoal. That's what I can say. Try to be much more sustainable, and yeah, plant more trees. That's it from my side. Great. I think those are And very, yeah, yeah, sorry. also on a personal healthy basis, uh, it's just a joke. If you uh, uh, I don't know I should say or not, but yeah, if anybody smokes, they should stop smoking as well, because that would benefit you in terms of health as well as in terms of environment. So yeah, that's it. I think it's a good ending note. Tej, I think you should have a word with the Apna admin team. Please get in touch with them. I think they'll be able to address your queries better. आप एक बार अपना एडमिन टीम से बात कीजिए. ये सेशन इज मोर ऑफ एक्सपीरियंस शेयरिंग. मेंटर्स की जो जर्नी रही है, जो उनकी एक्सपर्टीज रही है, वो शेयर करने वाली सेशन है ये. सो या cool. Yeah, Angshash, thank you so much. So with that, guys, we'll come to the end of today's session. Thank you so much again, Akshansh, for joining us and for sharing your expertise with us. I believe everyone who listened keenly would have found this session useful. Thank you so much, everyone, for joining in. I put out the feedback form multiple times. I would please humbly request most of you to fill the form. It will really help us in making your experience better. You can also visit the website which I put in the chat. Here you'll find the recording of this session and also the previous sessions that we have organized. You can also check upcoming sessions over there. You can also register with for the sessions by joining the Apna community, and there you can see all the upcoming session posts and a lot of things happening over there. So as mentioned earlier, we'll keep having these sessions every day. Tomorrow, the next session is at 3 p.m. We hope to see you all in the next session. Good evening, and thank you so much, and have a great day. Thank you, Akshay. Have a great day. Bye.